हाय गाइस, दिस इज मृण्मय। सो आज हम एक नया ड्रग पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द ड्रग इज नक्स वोमिका। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द फर्स्ट ईयर सिलेबस। ओके, इट इज़ अ पॉलीक्रेस रेमेडी। ये सेकेंड टर्म ऑफ द सीबीडीसी सिलेबस में दिया गया है। तो हम नक्स को आज पढ़ेंगे। बेसिकली विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम द एलियंस की नोट। एलियंस की नोट हम अच्छे से पढ़ेंगे विद सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स फ्रॉम द एसके टू बे। आई विल बी ऑल्सो शोइंग यू सम पिक्चर्स. Okay, I'll be showing some drug picture also, and the picture of the Nux Vomica plant, and I'll be sharing some clinical cases also. और जो मैं हाईलाइट करूँगा एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स आई विल मार्क, उनको अपन को याद करना है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पार्ट विल कम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द इन एग्जाम्स. ओके, और ये 10 मार्क्स में आ सकता है एज अ ड्रग पिक्चर. ओके, आई विल स्टार्ट एंड आई विल गिव यू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, जो लास्ट मिनट में अपन को पढ़ना है. ओके, so Nux Vomica will be starting. Nux Vomica, ओके, पॉलीक्रेस रेमेडी है ये, एंड फर्स्ट ईयर सिलेबस में ये दिया गया है. ओके, Nux Vomica. ओके, द कॉमन नेम इज पॉइजन नट. ये क्या है? ये है कॉमन नेम. कॉमन नेम इज पॉइजन नट. अपन को ये याद रखना है. एंड द प्रूवर इज डॉक्टर हैनीमैन. The common name is poison nut. The proper is Dr. Henneman, and the family is Loganici family. Okay, the family is Loganici family. अपन को ये इतना याद रखना है. This is the first point you have to write in the exam paper. Okay, poison nut, Henneman and Loganici family. चलिए, we'll start with the introduction part. उससे पहले I'll show you the picture of Nux Vomica plant. Okay, this is the picture of the Nux Vomica plant. ये ऐसा दिखता है. Okay, ये wild में मिलता है and will be knowing about this plant more, but it is known as Staichus Nux Vomica. Okay, it is a poison. ये एक poison है. Okay, we'll study in detail about this in more in FMT. FMT में ये poison की तरह से पढ़ाया जाता है. It is a poison. Okay, convulsions कराता है. This is the Nux Vomica seeds. Okay, कुचिला seeds भी बोलते हैं इसको. This is कुचिला seeds और नक्स सीड्स. ये बहुत पॉइजनस होता है. ओके, ये बहुत पॉइजनस होता है. सो बेसिकली दिस इज द नक्स वोमिका सीड्स एंड दिस इज द नक्स वोमिका प्लांट. दिस इज द, ये प्लांट हो गया. और विल स्टार्ट नाउ. तो ये कॉमन नेम हो गया. ये दिस इज द प्रूवर नेम एंड दिस इज द फैमिली नेम. ओके, चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट. This is the screenshot from SK2B book. Okay, so Nux Vomica is the male counterpart of Pulsatilla and Ignatia. Okay, ये सब छोड़ो. It is, this point is important. It is the most frequently looked for medicine in the box of every homeopath. Okay, very important medicine in the life of a homeopath. इसके बिना practice नहीं कर सकते. Okay, okay, this remedy is indispensable. This remedy is indispensable because it's the first remedy indicated after much dosing with allopathic drugs. तो जब पेशेंट्स आता है विथ, मतलब बहुत सारा एलोपैथिक ड्रग्स लेके, दिस इज द ड्रग इंडिकेटेड. ओके, द बेस्ट रेमेडी विथ विच टू कमेंस द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस दैट हैव बीन ड्रग बाय वेरियस स्कूल्स. तो नक्स कब दिया जाता है? नक्स इज बेसिकली गिवन व्हेन द पर्सन इज drugged by person is drugged by allopathy, ayurveda, mixopathy, all these things ना. जब इन सब से the person is drugged by all these schools, Nux can be given. Okay, and this is the very important point. It is Hahnemann's greatest polycress remedy. ये बहुत, इसका the spheres of actions are too much, बहुत सारा है. Okay, and applicable to both acute and chronic ailments. मतलब this drug can be given both acute and chronic ailments. acute remedy कौन सा? acute मतलब क्या होता है? जो short term का disease होता है. chronic मतलब जो long time तक जाता है. okay, this much is done. this point is most important point. नक्स को अगर हमको याद रखना है तो अपन को ये याद रखना पड़ेगा. okay, preeminently the remedy for the conditions incidental to and arising from the so called modern civilized life. तो नक्स किसको दिया जाता है? मॉडर्न सिविलाइज लाइफ में दिया जाता है. हम आगे पढ़ेंगे, इट विल बी मोर क्लियर. ओके, चलिए, दिस मच इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. हमने बस कॉमन नेम, प्रूवर
एंड फैमिली पढ़ लिया है। एलेंस कीनोट हम चाहेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट की अपन को क्या पता चला, नक्स इट इज़ द एनिमल्स ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग इन our practice, and it is basically given for modern civilized life. Okay, modern civilized life we'll get to know as we go forward with the lecture. Okay, ये plant के बारे में दिया गया है. Okay, this is the introduction part about the plant. It is also very poisonous. Okay, after undergoing the process of potentization, the bitterness and the poison effect does either transform into marvelous creative power. Okay, and basically the drug was introduced into the materia medica. चलिए, we started the space of action. Okay, इस drug का action कहाँ कहाँ होता है. Okay, see in exam we have to write the headings like this: the common name, the prover, okay, the family. Okay, थोड़ा सा introduction लिख दिया, and then we have to go to the space of action. फिर pathogenesis ऐसे लिखना है अपन को headings में देके. Okay, so space of action क्या लिखा है? It predominantly acts on the spinal cord. कहाँ कहाँ act करता है? It acts on the spinal cord. Spinal cord में इसका काम होता है the motor and the sensory centers of the brain, the GI tract, the respiratory organs, the cardiovascular system, and the genitourinary organs. इसका mainly spheres of actions is basically on the spinal cord. Okay, अपन को GIT में पढ़ना है. Okay, and genitourinary tract, genitourinary tract, and also on the motor and sensory centers of the brain. Okay, mainly on the nerves, mainly on the GIT, mainly on the genitourinary tract. Okay, sensory sensory nerves of brain. Okay, so space of action mein if I write this much, I will get the marks. Okay, now I'll be moving on to the pathogenesis. Pathogenesis is basically how the drug acts. Okay, how the drug acts. Okay, we studied the pathogenesis now. Okay, it basically produces excessive irritation and excitability. Okay, it produces irritation produce करता है and excitability produce करता है. Okay, उससे क्या होता है? muscular incoordination and paralysis. When there is excessive excitement होता है तो incoordination होगा, your muscles won't be, मतलब आपका बात नहीं सुनेगा, your muscles and all won't be in your control. Okay, like this कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया. Okay, it acts on the organs. It irritates the mucous membrane of the alimentary tract. Alimentary tract मतलब GI tract को ये irritate करता है. Okay, producing dyspepsia like symptom. Dyspepsia क्या होता है? Dyspepsia होता है indigestion. Dyspepsia होता है indigestion. Okay, indigestion होता है. Dyspepsia मतलब indigestion. Okay, and stimulate the constipation. Constipation produce करता है, diarrhea, dysentery, all these things produce करता है. Okay, and ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, रिजल्टिंग इन ड्राई कैथारन कंडीशन. Okay, so basically the summary point is excessive irritation, excitability, and it excites the alimentary tract, producing dyspepsia, gastritis. Okay, and it irritates the respiratory system also. Okay, which basically results in dry cathedral condition. Dry cathedral condition का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि your nose will be dry, it will be blocked. हाँ, बट कैथाइलिक कंडीशन जैसे अपन को जुकाम होता है ना, बट नोज ड्राई होता है, वैसा ही होगा. ओके, चलिए, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स द वेसोमोटर सिस्टम एंड डज गिव राइज टू ब्लड प्रेशर. ओके, सो बीपी भी बढ़ा देता है, बिकॉज बीपी ऑल्सो इट इंक्रीजेस ड्यू टू इज एक्शन ऑन द वेसोमोटर सिस्टम, ड्यू टू इज एक्शन ऑन द वेसोमोटर system. This much is done. Okay, this much is done. Pathogenesis is done. The space of action is done. Introduction part is done. The common name, the prover, and the family. This much we have to remember. This is the introduction part.
this much we are done with. Okay, this much it will take around this much of the picture, this much of the page. Okay, so let's summarize. Okay, the common name is poison nut. We study Nux Vomica, and the prover is Dr. Henneman, and the family is Loganesi family. अपन आपको मेरे साथ बोलना है. Okay, and introduction में क्या लिखना है? It is the Henneman's greatest podcast. It is a drug of modern civilized life. It is a drug of modern civilized life. Okay, and spheres of action, it basically acts on the spinal cord, on the GIT, on the genitourinary tract. It also acts on the motor and the nervous system of the brain. This much spheres of action. None. And pathogenesis क्या है? How the drug acts. Drug क्या क्या करता है? So it basically produces excitation. And it produces irritation also. This much is done. Okay, it irritates the mucous membrane of the alimentary tract. एलिमेंट्री ट्रैक्ट को इरिटेट करता है. इससे क्या होता है? प्रोड्यूसिंग डिस्पेप्सिया लाइक सिम्टम्स. डिस्पेप्सिया प्रोड्यूस करता है. ओके, स्टिमुलेट कॉन्स्टिपेशन. इट प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, डायरिया ऑल्सो, डिसेंट्री ऑल्सो, and affections of the respiratory system. So basically it acts on the GIT, producing gastritis, acts on the respiratory system to produce dry catheter like condition. Okay, it acts on the vasomotor system of the brain, which produces rise in the blood pressure. This much is done. Okay, नाउ द मेन पॉइंट कम्स. इसके बाद अपन एलेंस के साथ जाएंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन. मेकअप ऑफ द बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द मेकअप ऑफ द बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशन में सब आ जाता है. मेकअप ऑफ द बॉडी, द थर्मल्स, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, द टेम्परामेंट, वो सब आता है. माइजम्स, वो सब भी आता है. ओके, सो मेकअप ऑफ द बॉडी. नक्स इज आइडियली सूटेड टू थिन पेयर सब्जेक्ट्स. थिन पेयर सब्जेक्ट्स, थिन पेयर मेरे जैसा. देखिए, thin spare subject with dark hair. Okay, just remember me. Thin spare subject, dark hair, dark eyes, dark hair, dark complexion. I am not dark complexion, but you can imagine anyone जो आपके क्लास में काला है. ओके, जो पतला है, डार्क complexion, who lead a sedentary life. दिन भर बैठा रहता है, दिन भर बैठा रहता है. नर्वस भी रहता है, बैठा रहता है. एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस. तो द पर्सन हु इज थिन, डार्क हेयर होता है, वो नर्वस रहता है, ऐसा रहता है. एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल इम्प्रेशन. कोई उसको कोई चिल्ला दिया, लाइट आ गया कहीं से, नॉइज आ गया, म्यूजिक बज गया, तो वो इरिटेट हो जाता है. बेसिकली नक्स वो उस टाइप का पर्सन, वेरी मच इरिटेटेड वाला पर्सन. ओके, हैबिचुएटेड टू ओवर स्टडी, जो ज़्यादा पढ़ता है. डिबोचस, जीलस एंड हाइपोकॉन्ड्रिया. हम इसको एलियंस में अच्छे से पढ़ेंगे. एलियंस में भी सेम लाइन दिया है. तो बेसिकली नक्स जो थीन होता है, एक्साइटेड रहता है, नर्वस रहता है, उस टाइप का पर्सन को दिया जाता है. हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, टेम्परामेंट. ही इज बिलियस, सैंग्विन, इरिटेबल टेम्परामेंट. बिलियस, सैंग्विन एंड इरिटेबल टेम्परामेंट. बिलियस टेम्परामेंट मतलब क्या है? फुल ऑफ बाइल. फुल ऑफ बाइल. फुल ऑफ बाइल का मतलब क्या है? बाइल का मतलब यही है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको ज़्यादा होता है, ही इज ऑफ बिलियस टेम्परामेंट. सैंग्विन मतलब फुल ऑफ ब्लड. फुल ऑफ ब्लड, फुल ऑफ ब्लड. इरिटेशन होता है उसका. दिमाग बोलते हैं ना कि मतलब दिमाग में ब्लड चढ़ गया, गुस्सा रहता है, इरिटेशन रहता है, वही सब है. सो बिलियस टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट, इम्पेशेंट टेम्परामेंट. Impatient, he is very much impatient, he is very much irritable. Okay, anxious, irritable, all these things. So अपन ने constitution पढ़ लिया. It is adapted to nervous, jealous person, dark complexion, thin person, thin spare subjects. Okay, dark complexion होता है, dark hair. Okay, and nervous, extremely susceptible to external impression. Okay, एंड हैबिचुएटेड टू ओवर स्टडी, ज़्यादा पढ़ता है. डिबॉचर मतलब जो गंदे काम करता है, लाइक एल्कोहल, ऑल दिस थिंग्स. नॉट गंदा काम पर से, बट एल्कोहल एडिक्शंस एंड ऑल दिस थिंग्स, इट इज डिबॉचरी.
हाँ, जीलस एंड हाइपोकॉन्ड्रियक। जीलस का मतलब क्या होता है? जीलस का मतलब होता है जो एक्सट्रीमली पैशनेट होता है फॉर हिज वर्क, एक्सट्रीमली पैशनेट फॉर हिज वर्क, जीलस, जील रहना, हाँ, मोटिवेटेड फॉर हिज वर्क। एंड हाइपोकॉन्ड्रियक इज बेसिकली जो इफ़ यू हैव, जैसे आपको डायरिया है, वो आप बोलोगे आपको कैंसर है, कि छोटे चीज़ को बड़ा करके बोलना, इसी को हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। वी आर डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर डन इन द टेम्परामेंट। ये एलेंस की लाइन है, नक्स इज cheaply successful person of an ardent character of an irritable impatient temperament disposed to anger spite or deception। इट वॉज गिवन बाय मास्टर हैनीमैन। हैनीमैन ने क्या बोला? नक्स किसके लिए सक्सेसफुल है? जिसको आर्डेंट कैरेक्टर, वेरी मच मोटिवेटेड फॉर हिज वर्क, ही इज़ वेरी मच फोकस ऑन हिज वर्क। अपने क्लास का टॉपर को समझिए, हाँ, जो बहुत मोटिवेटेड, बहुत पढ़ता है, पतला सा है, ऑफ एन इरिटेबल इम्पेशेंट टेम्परामेंट, उसको गुस्सा आता है कि मार्क्स 2 भी कम आ गया तो उसको गुस्सा आएगा, इरिटेबल होगा, हाँ, किसी को कुछ दिखाएगा नहीं, एग्जाम में खुद लिखेगा, कोई चीटिंग करने आएगा तो फंसा देगा, इरिटेटेड रहता है, जीलस रहता है, डिस्पोज टू एंगर स्पाइट और डिसेप्शन, गुस्से वाला होगा, धोखेबाज होगा। टॉपर लोग धोखेबाजी होते हैं, आपको पता ही है, हाँ। तो लाइक दिस, ओके, दिस वाज गिवन बाय मास्टर हैनीमैन, इट माइट कम इन एमसीक्यू एंड ऑल। रिलेशन विद हिडन थर्मल कैसा है उसका? चिली पेशेंट, वेरी चिली पेशेंट, ठंडा लगता है उसको बहुत, इज ए वेरी चिली पेशेंट, ओके। एंड माइजम क्या? डेफिनेटली सोडा इन द बैकग्राउंड, तो माइजम इज सोडा, so माइजम इज सोडा, डन। So what is the summary? This is the first part of the video, okay। हम next lecture में इसको continue करेंगे। Just say with me the common name, okay। Common name is poison nut, the prover is Dr. Henneman, okay। And the family is Loganaceae, okay। And the spheres of action, क्या है? It basically acts on the nervous system, on the spinal cord, okay, on the GIT, on the respiratory system, on the genital urinary tract, okay। And pathogenesis, what are the main points? And the pathogenesis, the main points of the pathogenesis क्या था? It was excitation and irritability, हाँ, excitation and irritability, हाँ, excitation and irritability। दिस इज ना समरी जो बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद अपन को हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? पहला पॉइंट, मेकअप द बॉडी, थीन स्पेयर ऑब्जेक्ट, जिलस, आर्डियन कैरेक्टर एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। माइजम क्या था? माइजम वाज सोडा, थर्मल, ही वाज वेरी चिली पेशेंट। और टेम्परामेंट क्या था? टेम्परामेंट, ही वाज बीडीएस टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट, इरिटेबल, इम्पेशेंट टेम्परामेंट, डन। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? माइजम, टेम्परामेंट। एंड हैनीमैन ने क्या दिया था? नक्स इज चीपली सक्सेसफुल इज द पर्सन्स ऑफ एन आर्डेंट कैरेक्टर ऑफ एन इरिटेबल इम्पेशेंट टेम्परामेंट, ओके, disposed to anger, spite or deception। This much is done, okay। So this is the introduction part। exam paper में अपन को ऐसे ही लिखना है, okay। The next part of the video will be starting with the NS keynote with the particulars। Thank you।